Good evening, everyone. I am Kanishk Gupta, and I am here on behalf of the National Law Training Institute. Today, we have among us Rishabh Shivani, All India Rank 1, Kanishk, All India Rank 55, and Pranshu Gupta, All India Rank 51, who will be sharing their insights on how they prepared together for CLAT 2022 and preparing together helped them ace CLAT with flying colors. So, it would be great if you guys could introduce yourselves, although it is not necessary, but yeah, just to break some ice. Uh, Hi guys, I'm Rishabh. बहुत बढ़िया भाई okay भाई थोड़ा hi इधर घुमा होता। hi guys I'm Kanishk I got all India rank 55 in CLAT 22. I'm from Uttarakhand and I will not name the city because nobody knows it. Hi everyone, I am Pranshu Gupta and I got AIR 51 and I am also from Uttarakhand. Pranshu's introduction was the best, guys. You are a failure. Yes, Yeah. +1 yes. कर दो। Okay, guys. So yeah, getting serious. Acha, tell the aspirants, how did you guys meet? Like, what was the source which helped you guys connect together? Was it the Super 30 Okay, batch, or you guys knew each other before the Super 30 batch? so the source was me, तो मैं start कर देता हूँ. So me and Pranshu were in the same legal age group batch. So when the platinum batch started, there were 9 people in that platinum batch. One of them was Pranshu. And we had a small study group with people in that group as well. And me and Pranshu we had been sort of preparing for a while together. And in January, we had the first Super 30 batch. When we had the Super 30 batch, we had this unofficial group, and we used to talk in that group. So Rishabh, Rishabh was in that group, and Rishabh was someone who I instantly connected with on a lot of things. And Shivani isn't someone who will message you कि हाँ भाई कैसा है. He's not that person. So I messaged him privately, and then we got talking. And what we used to do was back then this is a very weird thing, but हम लोग की intelligence judge करने के लिए उनको mock analysis पे बुलाते थे साथ में. हाँ. Because we used to our old group like me, Pranshu, Harshal, our other guy who's in Jodhpur, now in Gandhinagar. I don't know what he's doing, but we used to analyze mocks together. So we invited Shivani also, and that mock analysis was 30 to 40 minutes, but that video call was 6 hours long. Yeah. So that's how it started. Sort of. Right. So, matlab, it was never a very official like study buddy group type. It was more of a friendly group where Yeah, you guys chit chat, Yeah, bakchodi karte the, yeah. like talked Because everything Huh. except CLAT. I couldn't Yeah. approach them, right? Because like we started talking because like ऐसे like for friends and all कि भाई कैसा है and all, because the first हाँ. message also like फिर हम ऐसे ही बात mm, कर रहे थे, and then बहुत बाद में हुआ था कि we started कि all right, let's analyze the mock together, and after that we started studying together. तो yeah. ऐसा हुआ था. Right. So, guys, at NLTI also we started with the similar concept of promoting the study buddy culture. But what has been noticed is people are availing the services at NLTI just to get personalized mentorship by you guys, by NLS mentors, and they're not utilizing this as a study buddy culture, as a study buddy group, and they're not interacting with each other as much, and just confining it to the video call sessions that you take every weekend. So, what do you Hmm. suggest? Like, how should they interact with their buddies, and what all they can do as a study buddy group, and like what is the scope of improvement as a study buddy group? Uh, So I think it's about knowing people first. Like you guys just can't go and be like, okay, we'll analyze the mock together, and just get to know the person a bit, and then you can talk. Because study buddy group is not just ki, okay, we'll analyze the mock, we'll divide GK topics and all, and that's how it's done. Bas ho gaya. So you have to just connect with them on a normal person, like as a normal person as well, and then you guys study ki ha theek hai, because that's the case with every study group. It's not like almost every study group was made like for as friends, and then they started studying and all, right? Mm, Even if the main intention was studying, they still became friends and all, and it's not a very formalized thing. So hmm. like you guys can have like video calls, you can generally talk to each other, like have a private chat and all, and then get to know each other, and then you can say, okay, what we can do, because then you can get to know the person, what their strengths are, what their weaknesses are in
the paper as well, and how they can help you as well in general for the CLAT preparation. So I think that is what needs to be done. It should not be like, okay, we'll analyze the mock today, we'll put it Yeah, on the sheet, and then we'll ask the Hmm. mentor. yeah, like you Right. can't just have an academic relationship if you want to study together, because CLAT as a paper will get very repetitive because same problems होंगी, same mocks में गलतियाँ होंगी. So you also you also need to connect with your friends on a personal level so that you can share your problems with them. कि ये problem. It should not just be about studies. If it's just about studies, then it will get boring, and people, and first you need like a connection to to study effectively as well. So I think my advice would be maybe outside the video calls that we take, just have a video call among yourself, discuss about things, discuss about your preparation, discuss about your life. I don't know, but just sort of break the ice and try to become friends, because I think something which is different for us was because our study group didn't start like we didn't become friends because of studies. We were friends and then we started studying together. For these guys, it is not necessarily the case because they opted for the service, and which is not wrong. But thing is, they'll have to sort of take the extra step to try to become friends as well along the way if they want to properly utilize the services. Yeah. Yeah. Pranshu, Yeah, do you have anything to and add? yeah, and honestly, I think कि CLAT or any other entrance exam for that matter is a paper that there are gonna be times when you don't know what to do, and at that times you need support from other people, and this is where the study group really helps you because I think like I really received a lot of support from Kanishk and Shivani and Harshal too, because I know like I had a huge rough patch from February till the very last week of Present, the CLAT present, exam. present day. Yeah. And seriously, if these people weren't there, I don't know what I would have been doing. And I think even when we had those daily sessions, 4 out of 7 days, we weren't exclusively studying. It was more of random shit we talked about, videos on YouTube, stand up comedy, movies, and all. So it is very important that to function as an effective study group, you don't just study. You have to like become मतलब friends and all. हाँ, but like हम लोग थोड़ा ज्यादा ही कर देते थे because I हाँ, don't know, but we मतलब had, it's not like but don't इतना do भी नहीं that, करना. don't do that, पढ़ाई नहीं करनी है, don't do that. इतना भी इतना नहीं भी नहीं. करना है. हाँ. हाँ, Array, so but guys, listen. You guys were friends before being study buddies, but now our mentees are study buddies before being friends. तो अब उसके लिए yeah, बताओ, like specifically what extra steps should they take or what extent should they go to like they have to put in a little bit of extra yeah, effort to become friends. They yeah, have to organize meetings. They have to like rant वही. about CLAD. They have to rant about their yeah. mentors even कि हाँ शिवानी time नहीं देता हमें. Then only they'll become friends. हाँ. Yeah. So like अच्छा कोई एक दो tips like what should they do Uh, to become friends? I think like I think the one of the first things me and Shivani connected on was Formula One. We both really are into Formula One, and that was one of the first conversations we had. I think that was in the group. So And picking from Kanishk that, like flexing about King's College. Those yes, times. हम्म. मतलब जस्ट वही है uh, कि गेट टू नो द पर्सन. मतलब इट्स नॉट लाइक बस एक्सक्लूसिवली क्लैट का कि ओके यार व्हाट वाज योर मॉक हाँ. स्कोर, व्हाट इज योर वीकनेस एंड ऑल. इन जनरल भी uh, यू कैन टॉक टू द पर्सन कि भाई uh, क्या चल रहा है, वेयर आर यू फ्रॉम, या क्यों अभी दे डोंट नो ईच in अदर, सो वेयर आर यू the, फ्रॉम, कैसे मतलब हाउ इज योर प्रेप, कैसा वो चल रहा है लाइफ में, वैसे भी यू कैन टॉक थोड़ा सा. बिकॉज तब थोड़ा सा और पता चलेगा, यू कैन अंडरस्टैंड वेयर द पर्सन इज कमिंग फ्रॉम, क्या मतलब क्या उसका डेली वो रहता है. जैसे हमें पता था कनिष्क पांडे का डेली स्केड्यूल क्या रहता है. 12 बजे उठता है, 4 बजे तक टाइम होता है वेस्ट पूरे करता है, दिन और खेलता खेलता है, है. फिर 9 बजे आता है सेशन पे. तो सबका वो पता रहता है, तो सबसे एक्सपेक्टेशन भी कम हो जाती है वैसे ही. सो जैसे प्रांशु है, प्रांशु को अगर डेडलाइन दे दो तो प्रांशु लास्ट में करेगा, और प्रांशु एटलीस्ट कर तो लेगा. हाँ. इतना था. हर्षल और मैं तो पढ़ते ही थे, हर्षल और ये कनिष्क पांडे नहीं पढ़ता. सो वही कि अब राधन अगर लेट्स से ये फॉर्मल सेटिंग में होता तो कनिष्क पांडे ग्रुप से पक्का बहुत ही पहले निकल चुका होता, इवन दो उसी ने बनाया था, बिकॉज वो पढ़ता ही नहीं था, उसका कंट्रीब्यूट वर्चुअली नथिंग था. नहीं. इस कॉन्टेक्स्ट में मतलब यू कैन एक्चुअली गेट टू नो, बिकॉज वहां पे तो एवरीवन इज सॉर्ट ऑफ सीरियस इन द वे कि सबको मेंटरशिप भी चाहिए, सबको वो भी करना है, लाइक क्लियर करना है, नॉन मतलब जो भी है. सो यू कैन एक्चुअली टॉक टू द पर्सन, यू कैन जस्ट मतलब थोड़ा सा बात कर सकते हो कि भाई क्या वो है. मतलब इन जनरल यू कैन टॉक टू द पर्सन, एंड देन यू कैन भी कि हाँ ठीक है ये पढ़ना है, ये करना है.
No, that can also like Also, you can, हाँ बोल नहीं हाँ नहीं, हाँ, so you the can, point is कि स्टडी ग्रुप को ना प्योरली प्रोफेशनल वे से नहीं देखो, इंजॉय भी करो थोड़ा। हाँ सबसे बड़ी जो इशू है कि यहाँ लोग इनिशिएटिव खुद से नहीं ले रहे कि एक दूसरे से बात Right, करें right, नॉल, right. जो हम लोगों ने किया था अपने केस में। लाइक इवन ऑन द सुपर डैडी ग्रुप वी यूज्ड टू टॉक अबाउट रैंडम शिट। पढ़ाई की बातें कम ही होती थी उसमें भी। Yeah, you guys have that NLTI enrolled students thing as well, no? उस पे भी बात कर सकते हो ताकि सब लोग को उसमें भी जान like, पाओ, यू अपने हाँ मेंटर ग्रुप में बात कर Hmm. सकते हो एंड ऑल। और ऐसे जज हम्म। जज करने का वो मत करना कि भाई लोग जज करेंगे। कुछ कोई नहीं करता। कोई जज नहीं कर रहा। हाँ ओके, Shivani might judge. Shivani का नहीं कह सकते. शिवानी जज करता है लोगों करता है ये। हाँ. को। अच्छा, okay guys, so coming to analyzing mocks, तुम कह रहे हो like शुरू से कि analyze करते थे, we used to take 6 hour session ये वो, तो how did you guys analyze mocks? Like 150 questions, you decided which mock to give, and then you guys analyzed it together. Was it this way, or हाँ there is a hidden हाँ, inside joke also? नहीं तो 6 घंटे का सेशन वो बस ओवरऑल चलता था, बट उसमें मॉक एनालिसिस 50 मिनट का ही होता था। सो द वे इट वर्क वाज, ओके वी थ्री विल डिसाइड कि हम लोग एक मॉक देंगे, एंड जब उसका रिजल्ट आता था विल सी कौन कौन से मिस्टेक्स एंड विल गो सेक्शन बाय सेक्शन ऑन द मिस्टेक्स। हाँ, हम्म। so say I got the fourth question of English wrong and Shivani got it right, so he'll explain कि why what he did, जो उससे सही आंसर मिला मेरे को नहीं मिला। हाँ, and if there was a, we would debate also on our answers, then maybe my answer is more right and this the paper said वेरी his answer is इंटेंस wrong. डिबेट। हाँ Very हाँ। intense debate. हाँ, उसमें ज्यादा टाइम लगता था, तो ऐसे करके the thing is even our coverage of total number of questions increases. जैसे कभी कभी लाइक, क्योंकि 150 क्वेश्चन एनालाइज करने का एक एक करके जो सही भी है उसका कोई पॉइंट नहीं है, बट समटाइम्स इफ देयर इज अ क्वेश्चन व्हिच इज कंटिन्यूअस, हाँ तुम्हारा सही हो गया, तुमने ध्यान नहीं दिया, बट someone else has got it wrong, so he starts debating upon that. Then you can see other points of views for that same question, and because it was 3-4 people doing the analysis together section by section, of course not GK and maths, but doing this analysis together, we can, like your total coverage of total numbers you cover during the analysis will also increase, because everyone will have different mistakes, everyone will have different opinions and different answers. So it was a really effective way of analyzing mocks. I would say Plus, we because sort of helped each other as well. Like it's, let's say it's हाँ, about in English. Let's say if the question is about tones or about word meanings and all, right? That what is the antonym of this or like meaning of something like that. So in that cases, Pranshu helped a lot. That Pranshu knew कि okay, this is the word and all कैसे वो होगा, right? But if it's, let's say about CR में कुछ वो होता था, correct sometimes, तो Kanishk also helped, ठीक है? एंड देन जीके तो legal, ऑब्वियसली हम डिस्कस करते थे, बट यार लीगल में कुछ होता था तो मी एंड हर्षल यूज्ड टू एक्सप्लेन, मी एंड yeah, हर्षल की भी वो हो जाती थी कभी कभार डिबेट लाइक। like yeah, like there are videos on my phone of them fighting over an answer. या ये 40 साल दोनों के बाद। रैंडम एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट्स पे हाँ, like, लड़ते रहते थे। कनिष्क बट और मैं मैं सही था, ब्लैंक बैठे रहते थे, क्या हो रहा है। आई वाज राइट अबाउट दैट सो। हाँ ठीक है। हाँ, अच्छा सो guys, so वही है coming, मैथ्स का yeah, है। yeah, सो go अगर ahead. हर्षल डज नॉट नो कि मैथ्स मतलब वो मैथ्स का सेट कैसे हो रहा है, सो वी कैन डिस्कस कि भाई व्हाट इज द करेक्ट अप्रोच टू Yeah. दैट। हाउ कैन यू, हम्म। लेट्स से इफ यू हैव 5 मिनट्स एंड यू आर नॉट एबल टू कंप्लीट इन 5 मिनट्स, तो एटलीस्ट कितने क्वेश्चंस कर सकते हो। जैसे कि कुछ कुछ क्वेश्चन में इट्स नॉट लाइक तुम्हें पूरा डेटा बनाना ही पड़ेगा तभी सॉल्व होगा ना, तो वैसे भी कर सकते हो। So we ना different because different approaches of viewing the question, different approaches of interpreting the answer and reaching a different answer, बहुत चीजें हो जाती है, बहुत सारे combination होते हैं। So in that case it really helps each other कि that you're knowing the other side's perspective as well, तो फिर तुम debate Say करोगे। I'll give an example. So Harshal was very good with legal. हमेशा से he used to score over 30 and मैं हमेशा early 20s में score करता था in legal. But so I used to think ऐसा तो है नहीं कि बहुत there's a difference between the way we comprehend. It's just that his way of approaching questions was very different. The way he said, कि, okay, you analyze if it makes sense here. You just don't go use. The thing is, I used to do legal like I used to do CR. But then he told me that this is not the correct way to do it. He's told how you're supposed to approach legal questions, and that changed. And in the final CLAT, maybe okay, the section was probably easier than Wo, but I got a score of more than 30 in legal compared to my usual 25, 23, whatever. So that really helped because I improved in that section, not because I did any effort on my own, but because he told me what's the correct way to approach that section.
Right. So people are very keen to know about your GK notes, the notes that run over 550 pages. So can you tell us whose idea was it to like divide topics and collate notes? And please don't disk Paranshu. I know the backstory, but please behave on the So live stream. I'll tell you. Yeah. So like because I was preparing before I met them as well. So the GK notes, like the document was made before that, right? And I used to make notes on that, right? So after that happened, and then we started discussing. So initially we did not do much of GK, in the sense that we did not divide topics. We just discussed ki, Hmm. okay, ye hoga. Then in during the last stages, like, so what happened was I gave them access to the notes. Ki, okay, you can edit them, you can see the notes as well. So पहले हर्षल को था, because me and हर्षल हम GK में ज्यादा वो करते थे, तो हम बहुत सारे facts एक दूसरे So को compliment करते थे. there's a backstory behind this as well. So once we were like having a analysis, and हम लोग एक दूसरे पे बहुत चलने लगे कि तू गलत है, and we decided कि okay, for the next week the four of us won't study together. We'll study in teams. Yeah. Me, Shivani and Harshal, and me and Pranshu. So like we'll study together and we'll see कि next अगले दो mock में ज़्यादा score कौन करता है. It was just a friendly bit. तो बिकॉज अब तक वी वर स्टडिंग जस्ट ऑन आवर ओन ऐसे जीके उसका, तो मैं और प्रांशु कर रहे थे, हम दोनों की जीके भी अच्छी नहीं थी, तो हम लोग बहुत स्ट्रगल कर रहे थे, बट दीस टू गाइस डिड सो टू enhance their GK preparation, they shared all their notes with each other. So Shivani shared that document with Harshal first, and then they sadly won also that did, but ठीक है, because of Pranshu, क्योंकि Pranshu ने elect में गड़बड़ कर दी, but still. So that's how it started, and what we did in the notes was, so later he shared it with all of us, and what we did was कि शुरुआत में, because he had already collected like 200 topics, so first we see कि कौन कौन सा topic हमने किया है जो इसके पास नहीं है, because we had a prior document before Shivani was with us. So we started adding those topics, and for the new topics हम लोग एक सब एक लिस्ट बनाते थे कि अच्छा ये टॉपिक है, ये टॉपिक तू कवर कर, ये टॉपिक तू कवर कर, and we'll divide. And it wasn't कि like I think Prem mentioned it कि वो लोग sources divide कर देते थे कि तू इंडियन एक्सप्रेस कवर कर, ये कर. This is not what we did. हम बस टॉपिक डिवाइड करते थे और उसको जितने भी सोर्सेज यूज करने उससे डिवाइड करो and just add it to the Google Doc. So that's how it ran over 550 pages. And I think with time we used to also add notes into already pre-existing topics. जैसे Russia Ukraine वाला notes is 25 pages long, 25 Google Docs के pages, because we सीओपी used to वाला keep ही adding stuff. वो इतना ऐड हुआ है उसमें, दैट इज 17 पेजेस, एंड वो सिर्फ सीओपी का इन्वायरमेंट के, उसमें बहुत टॉपिक्स और हैं जो अभी उसमें उस 17 पेज में नहीं है. हाँ, so थोड़ा बहुत ऐसे बीच बीच में हम ऐड भी करते हैं. It's not like कि अगर शिवानी ने सीओपी के notes already बना दिए थे तो that was it. We kept adding a lot of stuff. Right. So which all sources did you refer to? The Hindu, Indian Express, after, like, these are the primary sources. After that, you just search it on Google. There are articles by Times of India, Hindustan Times, Live Mint, then Wikipedia as well for geopolitical topics if you want to just Yeah. get a basic understanding, and for random niche facts. And then Drishti IS Compendium, CLAT Post, and Like अभी ऐसा Mantarni. लग रहा होगा कि बहुत ज्यादा है, but like But we I think restricted our sources a lot. Like yeah. ऐसा नहीं था कि अगर इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल पढ़े तो हिंदू से भी पढ़ेंगे, because पता है कि सेम चीज ही होगी. So we'll take one newspaper article, maybe a Wikipedia read through, maybe something like maybe the HTIS, more than enough. अब पेपर में कुछ अजीब क्वेश्चंस आ गए, but our notes were more than enough, I think. Yeah. So since the CLAT is in December this year, do you think your notes would be relevant for the aspirants? Because every coaching is suggesting that they should know current affairs from January till December. So for January to June, we have done that. Plus, for Jan to June, we also did the Drishti compendiums as well. Like, we did them, we divided them, and we had done them as well. And कुछ उसके notes है भी होते हैं, like the relevant ones, not ज़्यादा in depth. But वो है, so I think that is relevant for them, because main तो Jan to June वाले ही notes का ही था, because like उससे पहले का obviously भी था, but उसके बाद के भी notes का ही उधर ही था. So I so think January to June, I think it will be more than enough. उसके आगे तो आपको समझ नहीं किया, but it will be more than enough for January and February. But even then, मतलब वो होता है ना, बहुत चीजें repeat हो जाती हैं. Not if let's say the topic is not repeated, but many facts are repeated.
राइट? Hmm. Let's say even if you search a topic on दृष्टि IAS, एक previous article में वो covered होता है, correct? And let's say वो previous Hmm. article से हमने भी थोड़ा refer करा था, so you don't have to refer to that article या something like that. मतलब it gets Right, a right, right. lot of stuff, lot of because let's say notes में इतना है regarding organizations कब वो बना, correct? Regarding let's say UNESCO के बारे में है, बहुत ऐसी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जो न्यूज में आती रहती है, करेक्ट? बहुत ऐसे टॉपिक्स के बारे में, जैसे नॉर्थ ईस्ट के सारे टॉपिक्स के बारे में, नॉट जस्ट आफ्सपा, तो वो तो एवरग्रीन Hmm. टॉपिक्स होते ही हैं, है ना? सेडिशन के बारे में है, Hmm. थोड़ा लीगल उसके बारे में भी, इफ यू वांट टू स्टडी एंड ऑल। तो वैसे द थिंग Hmm. दे गेट रिपीटेड एज वेल, सो इट्स नॉट लाइक कि नहीं ये तो पुरानी है तो रेलेवेंट नहीं है। जैन टू जून के लिए दे आर ऑब्वियसली रेलेवेंट, उसके पहले उसके बाद के लिए भी कुछ कुछ चीजें अगर रिपीट हो रही है तो वो हो जाएगा। Yeah, that's true. So for something like Russia Ukraine जो अभी तक चल रहा है, like you अगर can तुम just में add अगर more कोई facts to it. ड्रॉपर है, बैकलॉग है जिसके पास, तो वो उसको रेफर कर सकता है। हाँ. ऑल्सो ये Right. भी है कि वही है कि जैसे हमारे नोट्स में है क्या, हमने किया क्या है, जैसे नॉर्थ ईस्ट हो गया, जैसे ऋषभ ने बोला, हमने नॉर्थ ईस्ट के सारे इवेंट्स को कवर कर रखा है, मतलब कंपाइल कर रखा है। एंड इफ कोई ऐसा बंदा है जो बैकलॉग फेस कर रहा है, उसको कोई इशू ये आएगा कि उसे हर सोर्स को, हर इवेंट को सेपरेटली सर्च करना पड़ेगा और अलग अलग सोर्सेज में जाना पड़ेगा। बट यहाँ पर हमारे नोट्स में फायदा है कि बहुत कॉम्प्रिहेंसिव है इस मामले में। सो सारी इन्फॉर्मेशन एक ही जगह है। सो इफ Right. यू डू दैट कंप्लीटली, ऐसा नहीं कि यू विल बी नीडिंग एनी अदर सोर्स except maybe like a Yeah. quick reading of the Drishti जैसे IS लेट्स से compendium. ये जो But वीकली करंट अफेयर्स टॉपिक लिस्ट है, इफ वी रेफर टू दिस, देयर आर थिंग्स जो हमने लाइक जो ये तो अभी का ही है, बट वी हैव कवर्ड दिस, राइट? लेट्स से आजादी का अमृत महोत्सव, हर घर तिरंगा, वी हैव कवर्ड आजादी का अमृत महोत्सव उसमें Hmm. अच्छे से, बहुत ज्यादा। हर घर Right. तिरंगा वाला टॉपिक मे बी उसमें स्पेसिफिकली नहीं है बिकॉज वो बात का है, बट उससे पहले का वी हैव कवर्ड। पीएमएलए एक्ट है उसमें, राइट? एनर्जी कंजर्वेशन बिल ऑब्वियसली नहीं है, बट लाइक जल जीवन मिशन, एंटी डिफेक्शन लॉ, आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी के बारे में भी है, सो वी हैव कवर्ड अबाउट दैट। Yeah. So yeah, Also, so Rishabh, when they refer to your notes, they get the hang of how they have to make notes. Like I was going through your notes, and Yeah, you have brilliantly connected different topics. You have connected COP with the hydrogen mission, the methane mission. Like so, they get yeah. to know how we have to connect Because different things. And we thought कि okay, what basically happens is that in general, like if we refer to 2020 paper and maybe 2021, what happened was that five out of the five questions, three were linked primarily to the issue, the one thing, and then for the fourth and fifth question, they just linked it to different aspects, right? So yes. let's say it's about COP. So with COP, they can the three questions may be asked regarding COP. When was the first COP? Where is the current COP held? And something regarding the current COP. The fourth and fifth question can be regarding what India is doing, right? In general, Hmm. regarding environment. So Hmm. what their mission was and something like that. So that can also be there. So for those type of questions, the broader issue at hand, that is where the notes can help you as well. Because let's say even in like 2022 paper, there were questions of 2020, like 3rd April 2020 का था जो CSR वाले passage में questions थे. So you can't obviously prepare for that, but बाकी ऐसा हो सकता है कि 2023 में they have asked something जो let's say what November 2021 का था and वो notes में है, Huh. वही Like होगा I even think. even in the, I think the which topic, even the Jal Jeevan mission sorry, deep ocean mission topic, most of them were not like from the primary source. Or question like they went to the International Seabed Authority, they went to all these places. They're not like primarily part of the deep ocean mission, but part of the broader scheme of ocean exploration. So Yeah, we yeah. had स्पेस like में हमारा एक स्पेस टॉपिक में है इफ यू अंदर. थिंक हमने स्पेस को बहुत सारे टॉपिक्स को एक में रख लेगा। इफ यू सी द गगनयान की नोट्स व्हिच इज आई थिंक व्हाट 63rd या 62nd नंबर का टॉपिक है, उसमें एक्चुअली पॉइंट है नहीं, वो मैंने आज ही देखा था इसमें। सो उसमें इफ यू सी गगनयान सिर्फ नहीं है, देयर आर अ लॉट ऑफ स्पेस के टॉपिक्स उसमें। एंड इफ यू सी क्लैट में भी दे आस्क, उन्होंने रैंडम क्वेश्चन पूछे, कोई लिंक नहीं था क्वेश्चंस के बीच में, सिर्फ रैंडम 5 फैक्ट्स अबाउट स्पेस थे, बस यही था। तो yeah. ऐसे भी हो जाता है। सो इट्स नॉट लाइक कि तुम बस वो इशू को प्रिपेयर कर रहे हो, उससे रिलेटेड इश्यूज भी देखने पड़ते हैं, उन पे भी थोड़ा नोट्स बनाना। एंड Right. यही लोग ये गलती कर देते हैं कि बहुत सरफेस लेवल पे एक्सप्लोर करते हैं टॉपिक्स को। हमारे नोट्स में बहुत डीप गए हैं एंड बहुत रैंडम फैक्ट्स भी भरे हुए हैं, जो मैं उस टाइम लग रहा था कि बहुत इररिलेवेंट है, बट जो पेपर जिस तरह का है, आई वुड थिंक कि थोड़े रैंडम फैक्ट्स कर लो, बेटर रहेगा।
मतलब हमने ये करते थे, गांधी सागर डैम वाज मेड इन 1960, ये तो मतलब तो किसी को भी नहीं करना मतलब चाहिए, बट ठीक ये है, एंड दिस इज आल्सो नॉर्मल, इसके ये तो अलावा भी नॉर्मल बहुत लेवल को, बाकी तो अभी नीचे भी और गंदे गंदे फॉल्ट और ही लाइक लेवल का। Outer आई थिंक space, देयर वाज अ we टाइम, आई थिंक देयर वाज अ टाइम वी रिमेम्बर्ड कि तुम रशिया से मेडिटेरियन सी कैसे पहुंच सकते हो, पूरा से पूरा स्ट्रेट अरे से हाँ हमने लाइक व्हाट 19 क्या 1896 से ओलंपिक्स बता दिए थे सारे, ऑलमोस्ट सारे, हाँ और हम हर हर सारे ओलंपिक के बारे में फैक्ट्स बता रहे थे कि हाँ इसके में ये हुआ था, इसमें ये हुआ था, सो हाँ, मतलब सो द थिंग इज कि शिव इतना भी मत करना बट इतना भी नहीं करना है, मतलब बट ठीक है, no, but कवरिंग ठीक लेस considering ठाक। और what फिर CLAT नहीं आ रहा है asks, पेपर में, ठीक है, अगर तुमने हाँ ज्यादा प्रिपेयर भी करा, बहुत चीजें नोट्स में जो थी वो नहीं भी आई ऑब्वियसली एग्जाम में, बट ठीक है एटलीस्ट बाकी चीजें जो थोड़ा वैसा था आई वो थिंक हमको पता भी चल गई हाँ, ना। even I think what this does is if you're prepared to this level, because I was like slightly scared जब मैंने ये सारे questions देखे, but I knew कि अगर मेरे को नहीं आता होगा तो केवल केवल ऋषभ या हर्षल को आता होगा, उनके अलावा किसी को नहीं आता होगा, एंड प्रांशु शायद शायद क्या भाई हाँ हाँ तो मतलब अरे मेरा like, मैं ये कहना चाह रहा हूँ लाइक you guys can find this irrelevant but CLAT का जो स्टैंडर्ड है even these all things become relevant क्योंकि पता ही नहीं कुछ भी पूछ लेते हैं bro, they can connect 2020 Olympics with like what the first Olympics also कि क्या हुआ था बता दो. So yeah, all these can be relevant, just go through whatever they have written, don't learn by heart, but yeah, it's always good to know extra. yeah. and okay, now to coming to the point of learning. So the thing is, it's not very easy to learn all these facts, especially if you're alone. So that's where the study group comes in as well, because like we used to do quizzes with each other. Like कि हम डिवाइड करेंगे कि आज स्पेस के ऊपर क्विज होगी, so all the topics related to space will of course we'll revise on our own, but then we'll conduct a quiz on it. उससे क्या होता है, because your brain is like forced to recall things and you're sub speaking it out loud, you're hearing yourself say it, you're hearing others opinions on your answer, ऐसे करके your memory of them increases. It's not just कि तुमने एक बस fact पढ़ा और तुम्हें याद रहेगा, ऐसा नहीं होता. If you just read it, you'll forget it probably. You have to like practice active recall, like you have to try recalling facts. So I think that is why things like quizzes and actual GK practice, like practicing GK questions, is also very important to remember the बिकॉज आई answers. थिंक एक और चीज, जैसे कि कनिष्क ने बहुत बढ़िया मेथड उसमें सीखा था, लाइक ही यूज्ड टू गेस जीके के आंसर्स, सो समटाइम्स व्हाट हैपेंड वाज लाइक बहुत क्वेश्चन में हुआ है कि तीन चार चार ऑप्शंस हैं, तीन जो है वो बहुत ही मेन स्ट्रीम वो है, लाइक कुछ भी दे दिया, लाइक दिल्ली कैलकाटा चेन्नई दे दिया, एंड फोर्थ वाला कोई रैंडम काशीपुर दे दिया जैसे कि, करेक्ट, सो वो थोड़ा उस पे देखता था कि काशीपुर क्यों दिया यहाँ पे, राइट, मतलब क्या रैशनल है काशीपुर का एकदम सोने का जब बाकी तीन बहुत वो है, सो उसमें हम हाँ देखते थे कि हाँ बिकॉज इतना इरेलीवेंट सिटी है, इतनी वो है, इसीलिए इसको यहाँ पे मेंशन करा होगा कि क्योंकि यही आंसर होगा इस चीज का, सो हाँ तो तो जैसे कि द क्वेश्चन की वेयर डज कनिष्क पांडे रिसाइड, दिल्ली कैलकाटा चेन्नई काशीपुर, तो बिकॉज इतना इरेलीवेंट सिटी इरेलीवेंट आदमी के लिए तो काशीपुर इज द करेक्ट आंसर, हाँ, सो so basically what the point is trying to make is pattern recognition. तुमने बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व किए and you realize कि the irrelevant city is the answer in a lot of these questions. हाँ, so you go to the irrelevant city if you don't know the answer. So obviously you can be wrong in that, but the pattern seems to suggest that it will more or less be the answer. yeah. That's how Right. like GK practice can help you, like तुक्का मारने में हेल्प कर सकता है. बहुत 20 क्लास 2020 में तो बहुत तुक्के मारे हमने, कुछ तुक्के नहीं तो मारे, हाँ हाँ, बहुत. तुक्के तो मारे. Guys, so some mentees have this question: do they also should they also focus on the spellings? Like Volodymyr Zelensky का spelling नहीं नहीं पूछा नहीं था नहीं CLAT नहीं में. नहीं, अगेन ये मतलब वही फर्स्ट ऑफ वही ऑल वही क्वेश्चन आ जाता है, बिकॉज लाइक इवन क्लैट 2021 के बाद बोला था कि अरे भाई अब ये शेख मुजीबुर रहमान का मैं डेथ एनिवर्सरी याद करूं, मैं सबका याद करूं क्या यार, इट्स जस्ट 1 आउट ऑफ 35 क्वेश्चंस, वो बहुत ही कम लोग का ही ठीक हुआ होगा, एंड इफ ऑल्सो अगर किसी का कोई लाइक भी होगा. हाँ, ऑल्सो वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की की स्पेलिंग नहीं पूछी थी, स्पेलिंग ठीक ही थी, जस्ट कि सरनेम कि उसका एस और मिडिल वो नेम में एस पूछा है. था क्या वो है, वो And ठीक also है. okay, but okay, so then even Rishabh got that wrong, that's not a problem. The point is हाँ कि you just go to the rational. हाँ, just think कि अगर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की है तो that is not a wrong answer. हाँ, even if say उसके नाम में S है, so if you just pick on Volodymyr Zelensky, so that's not a wrong answer and you can contest it later. So don't इतना मत सोचो, और स्पेलिंग नहीं पूछी थी वो बस और पूछा था, वही कि ठीक है. इतना स्पेलिंग्स याद करना पड़ेगा, नहीं ये नहीं नहीं करना होता है नहीं ये. नहीं, हम लोग को बहुत चीजें मेरे को याद है, हम लोग बिल्कुल भी हमें बोलना भी नहीं आता था हमें कि कैसे बोलते होने, कैसे क्या हाँ आंसर होता है. हम बस वो कहते थे अरे वो जेड से कुछ था ना, समथिंग फ्रॉम हाँ, जेड. वही वही वो कुछ भी बोलते थे. डोंट नीड टू लर्न एवरीथिंग, डोंट नीड टू लर्न एट ऑल.
Right. So, did you revise the 550 pages notes, or you just went through it ऊपर से skim किया? So मतलब we did not, मतलब वही थोड़ा सा that is where मतलब हमने थोड़ा सा वो कर दिया था, we blundered a bit कि हमने रिवीजन बहुत लेट स्टार्ट करा था, राइट, इन द सेंस कि नहीं नहीं आता है, कर लेंगे, बहुत लेट स्टार्ट कर, लाइक वी स्टार्टेड इन जून बिकॉज वी वर लाइक कि पहले दृष्टिया कवर कर लेते हैं और फिर वो कर लें, which was not a good thing, I मतलब A थोड़ा good सा वो idea, yeah. We should have not a given good at idea. least 1 month or more because या 18 days में थोड़ा सा हमने 540 लेट pages कर दिया was था. but So too we much. were not able to, प्रांशु गुप्ता ने बहुत ही कवर कर दिए थे 550 पेज के नोट्स. Pranshu covered 500 pages worth of note in 3 days alone. 3 days, हाँ. So, और फिर प्रांशु इतना बर्नआउट so हो गया कि अब एनलेस में पढ़ाई नहीं करता, सो योर चॉइस क्या करना है. बट एट द सेम टाइम मतलब वही कि 550 हमने थोड़ा, because we started revision so late, we were not able to cover the 550 pages whole. मतलब हमने largely we had covered, but still, so there was like थोड़ा सा हमारा कम efficiency चल रहा था. And one day we were like नहीं करना, so we did like I guess what 47 topics उस दिन. 47 topics one day. That day हमने And बहुत ज्यादा 47 cover कर लिया था. yeah. Because the हाँ point तो is 550 में से भी बहुत चीजें repetitive भी थी और कुछ चीजें तब लग भी रहा था कि because time भी कम था, तो तब था कि आज ये क्यों करना है मेरे को, मैं नहीं कर रहा. So वही था कि उसमें से हमने तो जितना हम तब कर सकते थे हमने कर दिया था, बट हाँ ये है कि थोड़ा वो हो गया था, मतलब we so that was a mistake. So yeah, that was a don't do mistake. that. Start your revision 1 month or more than 1 month in advance. Yeah. Okay, क्योंकि guys. So, since सब्सटैंटिव your नोट notes से are तो नहीं हो from सकता. right, since your notes वही are from January to June, and the more relevant part of this year would be August onwards, or let's say July onwards for CLAT 2023. That is in December. So, do you suggest that they should go through, like, skim through your notes first, just to contextualize how they should prepare for CA and how should Yeah. they make notes, or they should focus more on like August, July months, and then come back to your notes after? You can refer, जैसे like the weekly MIT list होती है, then you can see and then you can search कि कौन सा topic आ सकता है. जैसे वही like many topics are general in nature, like the Jal Jeevan mission. There must be something new regarding the Jal Jeevan mission, some report, some state topping it or something like that. So then you can search कि Jal Jeevan mission का क्या लिखा है. Then you will search you'll get a lot of things. You'll get Jal Jeevan हाँ mission and बहुत other related, water related उस पे चीजों पे मिल जाएगा. so for So someone who's just starting his CA prep, तो मैं रशिया यूक्रेन में कुछ अपडेट मिला. So to actually understand, you can go back to the notes. You can see कि क्या क्या हुआ था अब तक, and now how does that fit into the larger picture. yeah. So like, you can, but doesn't mean that you completely neglect अभी क्या चल रहा है to get through those old notes. Just you Yeah. can connect the current event with the past, and basically that's how you'll contextualize on your own. Yeah. Right. Guys, it is like not known what did you guys do for QT. Like तुम्हारा legal का पता है, CR का पता है, GK का पता है. But ये नहीं पता कि ऋषभ शिवानी, कनिष्क और प्रांशु ने मैथ्स के लिए क्या किया. तो please कुछ throw नहीं. some light on that also. So मतलब we did practice together, हाँ but the thing was कि because कभी कभी इन लोग को नहीं समझ आता, जैसे कि हर्षल से समझ नहीं आ रहा कि सेट कैसे करना है, या कनिष्क को नहीं आ रहा कि सेट कैसे करना है, राइट. तो अब मैं समझाता था, बट पॉइंट इज मतलब मैं समझा नहीं पाता था, इन द सेंस मैं थोड़ा अलग तरीके से सोचता था उसको करने के लिए. तो मैं बहुत ऐसे बोलता कि हाँ ये ऐसे कर लो, ऐसे कर लो, ऐसे वैसे हो जाता था. maths was something I think we didn't do as a study group properly together. थोड़ा करते थे in the last I think like there were days like because of course Pranshu had his science stream, so he was obviously much more busier than us. So और हम दोनों के पास कुछ काम नहीं होता, so we would just come on a call at like 2 p.m. during lunch, और हम हर सब्जेक्ट एक सेक्शन ले लेते थे. We have a section for each subject, and उसमें we'll also solve maths. So we used to practice like this, and I used तो like जब the thing is GMB का हुआ था, मतलब मैं सॉरी इंटरप्ट कर रहा हूँ, ये मतलब वो है, मतलब इट्स नॉट जस्ट रिलेटेड टू मैथ्स, बट जब GMB का हुआ था हम क्या करते थे कि हम 1:30 बजे आ गए, 2 बजे आ गए, एंड हम हर सेक्शन का एक सेक्शनल टेस्ट देते थे, पूरा एक मॉक ही बना देते थे उसको, राइट. और फिर बाद में उसको करते थे. एंड मैथ्स का तो क्योंकि GMB बकवास था, तो उसके बाद हम क्या करते थे, इन माय ओपिनियन बकवास था, तो उसके बाद हम लोग क्या करते थे कि हम लोग कहाँ से, सो देयर वाज दिस बुक अड्डा 247 का DI वाला बुक, एंड उसमें से हम केसलेट्स करते थे. तो उसमें केसलेट्स कर रहे हैं, देन उसमें क्योंकि वो बहुत ही टफ लेवल का होता था केसलेट्स, ठीक है. मतलब वो ऐसा होता था जो मेरे से भी टाइम पे उस टाइम 8 मिनट में कभी बार नहीं हो पाता था, राइट. तो
तब बहुत ज्यादा ये था कि कैसे, मतलब तब ये बोलते थे कि भाई क्यों कर रहे हैं ये लोग, बट द पॉइंट इज अगर हम वो टफ वाले चीज कर लेते हैं देन वी वर एबल टू डू द इजी वाला easy एज वेल, mock, easy ones. इजी जो हो And जाता था. And also, like, yeah, guys, focus on your QT. I think, of course, Shivani got a 15 and 15 because he was very good. But me and Pranshu got a 5 and 7. Huh. प्रांशु कुड हैव So, गॉट 15, उसने तो बस वो पता नहीं क्या स्पीड मेरी किया. स्लो रह गई, रोल नंबर गलत कर so दिया he था got. पेपर में। Yeah. So the thing is, वो अलग like, स्टोरी है। yeah. The thing is, if you need to focus on your QT, just can't neglect it like we did to some extent, because those 5-10 marks can mean a lot, especially in the 100 plus range. 100 में you are getting NUJS में early seat, and 105 में you are getting NLS. So you need to really, like, QT is a section where you can easily get marks. So just please, guys, focus on QT a lot. Yeah. Pranshu, our और aspirants would love to hear your story. What happened on the D-Day, bro? Did you fuck something up on that day? एक्चुअली ऐसा हुआ कि पेपर हमारे सेंटर में उन्होंने 15 मिनट्स पहले दे दिया पेपर फिल करने के लिए। और एंड मैं राकेश इतना पता है रोल महान, नंबर गलत था, फर्स्ट 15 मिनट मिनट एक्स्ट्रा टाइम के फर्स्ट बाद. मिनट में फर्स्ट मिनट में ही मैंने रोल नंबर गलत कर दिया। एंड मेरे रूम में एक और बंदे ने किया था गलत, वो बंदा तो रोने लगा, पर मैंने सोचा कि अब जो होगा देखा जाएगा, मॉक की तरह दे देंगे पेपर। पेपर देने के बाद फिगर आउट करेंगे अब कि ड्रॉप लेना पड़ेगा या क्या। तो मैंने एग्जाम दे दिया। एंड एग्जाम के बाद आई कॉल्ड करण सर फ्रॉम लीगल एज कि सर से पूछा कि सर आप बताइए कि क्या सीन है, ड्रॉप तो नहीं लेना पड़ेगा। एंड ही वाज लाइक कि जस्ट चिल आउट एंड मेल द कंसोर्शियम। तो फिगर आउट हो गया था। लाइक द कंसोर्शियम टोल्ड मी दैट दे विल फॉरवर्ड इट टू द चेकिंग डिपार्टमेंट। सो बट वो वन Like, वीक जो था देखो एलेट क्या और होता क्लैट क्या के है बीच में। कि आंसर की चेंज हो जाए तो लोगों का होता है कि 105 से yeah, yeah, yeah. 107 के उसमें Like, so स्पेक्ट्रम में my मार्क्स आ worry रहे was कि हैं। मेरे के प्रांशु गुप्ता कहता है या तो 0 आएगा या 107.5 आएगा, अलग ही रेंज है. So my worry was कि will I get NLS or not. Rishabh's worry was will he get rank 1 or not. प्रांशु का था कि या तो NLS ड्रॉप लेना मिलेगा पड़ेगा या या एनएलएस। कुछ नहीं। No, Pranshu, why didn't you ask them to change your sheet, bro? Wasn't it allowed? मैंने You बहुत can't, बोला, you can't change. दे You So can't डोंट change. You basically अलाउ can't इट। that's change that. the reason why Pranshu was also saved was because her OMR sheet there's this QR code, right? And हम्म, of the Right. OMR With sheet as well, and they match it with your ID that ID. this या Yeah. OMR sheet is for this person only. So एक ही होती है. So ये है कि So, please do not हम्म। उसको कुछ खराब मत कर हाँ, देना because नहीं मिलेगा. उसके अलावा भी there's ऑल्सो no बट recourse. जो भी मिल हो नहीं सकता because वो जस्ट एक डोंट ही पैनिक। OMR होती है हर person की. So इसलिए और क्योंकि वही था. हाँ. हाँ, वही है सबसे बड़ा वही बात है कि जस्ट डोंट पैनिक। क्योंकि और भी लोग थे उसी सेंटर में जिन्होंने गलती की और पैनिक करके पूरा पेपर खराब किया। मैंने पैनिक बिल्कुल Guys, नहीं, एकदम चिल yeah. किया एंड Or हो because गया। Pranshu was so immune to making mistakes, it did not matter. Guys, no, but this is really commendable कि उसने पहले मिनट में इतनी बड़ा ब्लंडर कर दिया, but still he managed to crack NLS. Like, bro, I admire you, Pranshu. Where are you, bro? Come to my room, I'll take you out for a treat. भाई अरे मतलब नहीं, किस चीज भाई के बहुत बड़ी लिए? बात है आए भाई, बहुत बड़ी देखो बात देखो, है। ऐसा ऐसा तो मेरे साथ भी हुआ। इसको इनको 15 मिनट पहले मिली। मेरे को 2 बजे के 2 मिनट बाद शीट मिली। ये लो, अब OMR भरो 2 बज के 2 मिनट पे। उसकी वजह से मेरा मैथ्स का सेट छूटा है। मतलब इतना खराब भी नहीं हूँ मैं, 7/15 वाला खराब भी नहीं हूँ मैथ्स में। बट तो मतलब ऐसे करके हुआ है। और फिर मतलब लाइक गाइस, कुछ भी हो सकता है क्लैट, बिकॉज इट्स वेरी रैंडम. I think we heard stories about how in some center people were using calculators. So it can be very हाँ हाँ, random. There's no कुछ भी proper कर सकता है. management. Yeah, guys, don't panic. Just do your thing. And a lot of people who panicked, who are pretty good, didn't get where they should have been, and people who were calm got. Is it weird to say What butt where much they higher shouldn't have been. than got where they shouldn't have ये been? भी है। Uh, Right. मैं Guys, प्रांशु people की want बात to I know think करूंगा. वही about कि your. mental element बहुत ज्यादा मैटर करता है. Yeah, हाँ Like especially on that day. बहुत ज्यादा. Hmm. Because like even for me, like when I started the paper, मैंने पहले जीके कर दिया था एंड इंग्लिश के 2 पैसेज करे. सो मैंने जीके बस टिक करा है पेपर में एंड 2 पैसेज इंग्लिश एंड वो पूरा 20 मिनट में हुआ था. बहुत टाइम चला गया था जो आइडियली कितना 12-13 मिनट में हो जाना चाहिए था. 12-13 मिनट का काम. हाँ. हाँ वो 8 मिनट चले गए थे. बट फिर बाद में थोड़ा सा गेन रहा मेरा पेपर, फिर 10 मिनट पहले हो भी गया था. मतलब थोड़ा सा वही होता है कि मोमेंटम बन जाता है, फ्लो वो हो जाता है. तो बट वो ये कि उस टाइम आई थिंक मेन ये होता है कि पेपर जब आप दे रहे हो ना, यू नीड टू ट्रेन योरसेल्फ इन सच अ वे कि पेपर देते वक्त आप में कोई वो नहीं आ रहा है. मतलब आप Yeah. बिल्कुल वो एक फ्लो में हो, बिल्कुल जोन में हो कि यू आर अटेम्प्टिंग द Like पेपर, यू आर थिंकिंग Shivani was, एनीथिंग अपार्ट फ्रॉम द पेपर. Shivani was very into the zone, of course. Rank तो नहीं है, so he was like fully into the zone. But the backstory is 3 hours before that उसने उल्टी की थी.
हाँ, out of so nervousness. Huh. So like you can be nervous, but you need to be like fully focused during the paper because it is a paper you need to focus पता on. नहीं है क्या You हो, can't because lose आप कुछ focus for नर्वस sure. होके कुछ होगा नहीं, जितना हो रहा है हाँ, और ही खराब हो जाएगा, कोई खराब ही फायदा होगा और नहीं। फिर। खराब है. क्या Guys, did you bet And on Shivani's rank? No, लीगल एज में हर मॉक में 145 किसी का स्कोर आता था, वो क्या शिवानी होता था क्या? नहीं नहीं नहीं, नहीं, जो मेरे वो से कम होता था आते थे उसके उसके बारे में पास. बिचिंग करते थे पर। भाई, नहीं, मत थिंग बोल इज कि भाई, मत बोल। नहीं, थिंग इज ऐसे होता था कि I think 1 2 weeks before the paper, there was this AIOM in which it was a very difficult AIOM, and Shivani got 115 in it. I got a 99 in it. और उसके पहले से मेरा शिवानी का स्कोर बहुत इक्वल चल रहा था. So after that, like I have already been comparing my scores only to Shivani. उसके अलावा मैं किसी से compare ही नहीं करता था. But after that, I sort of had the realization, okay, this guy is probably gonna like first time I messaged him, मैंने उससे बोला था you'll get a top 5 rank. But उसके बाद I thought, okay, he's getting rank 1. Like after that, I told him you are एक्चुअली getting तब rank ना, 1. तब मोमेंटम बहुत अच्छा बन गया था, लाइक Yeah, it's just moment. LEM बहुत अच्छा गया था, CL का भी अच्छा गया था। पॉइंट इज उससे पहले क्या होता था, लाइक नॉट जस्ट उसके पहले बट लाइक 2-3 वीक्स पहले उस LEM के व्हाट हैपेंड वाज कि CL के मॉक में जो बहुत ही इजी मॉक्स होते थे ना, उनमें थोड़ा उतना मैं ऑप्टिमाइज नहीं कर पाता था। सो ये होता था कि LE के जो मॉक्स है जो थोड़े टफ होते थे बट लेजिट मॉक्स होते थे, हाँ, उनमें ठीक आ जाते थे। I think this is something for me and Shivani. कि we were decent in easy mocks, but हाँ, we were much better when the mock was difficult. was tough, हाँ, yeah. तो Because I think ये एक और चीज पे आता है, because we used to do GMAT and LSAT and LSAT things. So एक बार हमने like करा था साथ में, हमारे से 2 ही गलत हुए थे out of the 20 20 27 I out of think. we got 25 or 27 in LSAT के Yeah, yeah. paper. हाँ. And हमने so उनका एक we section दिया got था, so used to we got used to harder things, like the things which were more difficult to do. But CLAT में ऐसा necessarily नहीं होता, and also because CLAT में sometimes the passage is very easy. It's the questions they play on. So that's why when it was actually a difficult mock where you have to read something difficult, and so that's when we were better, and that's why that mock really changed. That's why I think I got 100, he got 115. A lot of people who were good, who used to get 120 in CL mocks, and we also used to get 120 in CL mocks, they got 80s in that mock. So वो था, but of course CLAT में again normal CL mock जैसा आ गया, English and CR काफी easy था. मैंने तो पूरा like the first जब हमने बात करी थी after CLAT, मैं 5 बजे घर आया था, मैंने बात करी, मैंने like भाई क्या CL mock की तरह दे दिया इन्होंने, right? And which is why मेरे को लग भी रहा था कि तब तो LS के कट ऑफ 120 है। हाँ, he said कि यार मेरे को लग रहा है कि NLS की कट ऑफ 120 होगी. अब मॉक्स का वो चल रहा था, I was like ठीक है, एक दो मे बी पीपल, एक दो लोग होंगे जो हुआ चीटिंग एंड ऑल, बट सारे तो नहीं होंगे, बट देन नहीं, हाँ, नहीं तो सारे थे, सारे थे। Okay, guys, wait now. Official announcement करने दो. People are asking about the program. So just to inform you guys about this program, we at NLS are running this initiative by the name of National Law Training Institute, whereby we allot you personal mentors. All these are your personal mentors: Rishabh, Kanishk, Pranshu. We have Anushka, we have Harshit, and one more. Who's there? Kevin, Kevin. Yeah, my ranking. Yeah. Sorry, Kevin. No offense. And Kevin. So we'll allot you study buddies based on your mock scores, and you guys can interact. You guys can divide the topics, the weekly MITs we provide, and then research together, collate your notes, and then every weekend our NLS mentor will take a session to keep you accountable what you did throughout the week, and also prepare a roadmap for the next upcoming week. We'll also be sharing GK Weekly MIT coupled with the GK Weekly mock, which will help you be up to date with the recent happenings around the world. We are also planning to launch our upcoming test series in the month of September, and yeah, we hope you like it. So guys, continue. Just last question, we'll end on this happy note. People are asking about your life at NLS, although it might not be that happy, but please show that हैप्पी you're नोट happy. गलत वर्ड है। एक हफ्ते में प्रांशु बदल गया. उदय के साथ तो प्रांशु ने बोल दिया कि एवरीथिंग इज फाइन, आई एम डूइंग गुड. इतना झूठ बोला ना प्रांजल ने उसमें, तो बहुत इतना झूठ बोला नहीं नहीं, पॉजिटिव्स है, नेगेटिव्स भी बहुत है, नो डाउट, पॉइंट वो है। Okay, I think we can take it one by one. Pranshu, you can start. सी आई मीन मैं बहुत खुश हूँ कि यहाँ इतने अच्छी फैकल्टी है, जनरली बहुत ही
क्वालिफाइड फैकल्टी नहीं भाई, भाई किसी फैकल्टी ने देख लिया ना बाहर डालेंगे। बट नहीं, जनरली एक डिफरेंट ही एक्सपीरियंस होता है, लाइक स्टडिंग इन द बेस्ट लॉ स्कूल विद द बेस्ट टीचर्स, वो है डेफिनेटली, बट sleeping in front of them in class. उसी के कारण स्टैंडर्ड्स भी बहुत हाई है, मेंटल स्ट्रेस बहुत है जी हाँ। बट हाँ ऑन दी अदर हैंड फ्रीडम भी बहुत ज्यादा है, जो घर में मिलता है नहीं। तो जनरली लाइक इन्हें पता है, कितनी बार वीडियो कॉल पे बोल देता था कि भाई मम्मी आ रही है, तो बंद करो वीडियो अरे बाय। मैं तो 12 बजे सो जाता था यार, मैं यार 4-5 बजे तक जगता हाँ। रहता। तो प्रांशु, अच्छा तो कि तो अपना इतना अच्छा लगता है क्लास में बैठ के, सो व्हाट डिड यू डू इन सोम सर्स टेस्ट, एक बार बताएगा जरा? हाँ, सोमशेखर सर टेस्ट में क्या करा भाई तूने, इको के सरप्राइज टेस्ट भाई में? इफ सोमशेखर सर को पता चल गया ना कि क्या अब बात तो है। उसके उनके कॉन्सर्ट में भी बट नहीं गया भाई, बहुत बढ़िया। सो आई लाइक ऑडियंस की क्या हुआ था। बेसिकली वी हैड दिस सरप्राइज टेस्ट इन क्लास एंड सबकी फट गई कि क्या किसी को कुछ नहीं आता। प्रांशु गुप्ता को लास्ट सीट से बोला कि फर्स्ट सीट पे आओ, बिल्कुल सामने बैठा प्रोफेसर के, टेस्ट के बीच में सो वहीं गया, पे सो गया। सामने सो रहा है, सामने, ये भी नहीं लास्ट में सो रहा है, कहीं सामने सो रहा है। और सर ने टेस्ट के बाद बोला कि क्योंकि हर ज्यादा लोगों के 1 मार्क आउट ऑफ 10 2 मार्क आउट ऑफ 10 आ रहे थे, सर ने ऐसा बोला कि यू मस्ट हैव गेट एटलीस्ट समथिंग एक्सेप्ट दिस वन पर्सन वाज स्लीपिंग ऑल द टाइम। So with Pranshu basically 3 बजे तक रात के रैंडम चीजें करता रहता है, ठीक है। फिर प्रांशु सोता है और फिर फर्स्ट क्लास अटेंड नहीं करता है। 11 बजे, आज भी 11 बजे आया था। और सोशियोलॉजी में फिर प्रोजेक्ट प्रांशु कुछ करता है, सोशल में इसको पसंद आता है, बस बैठ जाता है, तब भी कुछ बोलता नहीं है, बस। So the thing is कि like Pranshu goes to a random 1 hour in the day of a midlife crisis, जहाँ पर समझ आता है या क्या कर रहा हूँ, एग्जैक्टली। क्या होगा मेरी जिंदगी में। I think that is true for all of us, थोड़ा बस सबके होता लिए है। है वो ट्रू यार। सो आई थिंक फॉर अस Guys, पर्टिकुलरली बिकॉज सब wait, इतना wait, जल्दी हो गया Rishabh, ना, Rishabh. बिकॉज When you guys go through that 1 hour of crisis, you come to me and take a free session, bro. That would help all of us. Yeah, go ahead. हाँ, सो वही बात है कि लाइक इट्स लाइक बिकॉज सब इतना जल्दी हो गया ना, लाइक इवन मी एंड yeah. कनिष्क यूज्ड टू टॉक अबाउट दिस कि भाई अभी तो इतना सब लाइफ इतनी मंडेन चल रही है ना। नाइन The लाइक thing is, जून स्टार्टिंग में मतलब बहुत actually स्टैग्नेंसी था, बहुत ही कुछ this था, was कुछ something हो I नहीं था। told him on 13 June, हाँ, 5 13 6 जून days before time. मैंने कहा यार अभी पिछले 2 साल से कुछ भी नहीं हुआ है लाइफ में कुछ भी ऐसा नहीं नया, हुआ है, और but अभी next 10 20 days में everything 19 will के change. बाद एक महीने में सब बहुत चेंज हो जाएगा। सो वही हुआ कि So लाइक so वी वर yeah, कॉल्ड on 3 13th जुलाई we को were, हमें बुला दिया, 26 को 20 रिजल्ट दिन में आया, सब बदल 24 गया। 25 को एंड 3rd को रिजल्ट आया। सो 3rd को हमें कॉलेज आना था, सो बहुत जल्दी हो गया। प्लस उसके बाद भी अभी मतलब ऑब्वियसली हेक्टिक तो होता ही है स्केड्यूल, बट थोड़ा सा हम लोग मेंटली भी उसके लिए प्रिपेयर भी नहीं हो पाए, है ना। एंड एंड ऐसा प्लस नहीं कि मैं गाइडेंस पहले से मिल रखी है, वी आर स्टिल लर्निंग ऑन द गो, सो या अभी इशू हो मतलब जाता वो है, ये थोड़ा सा स्टिल अ बिट, फर्स्ट फिगर सेमेस्टर आई आउट थिंक कर रहे हैं अभी भी। फिगरिंग आउट ओनली, इट्स नॉट लाइक कि सब पता ही है एंड ऑल, तो Yeah, वही होता है। so I think the thing which a lot of people need to know is कि CLAT के बाद actually ज़्यादा difficult हो जाता है। तो CLAT is not something जिसके बाद life आसान होगी। I think क्लैट ही CLAT सबसे के वक्त आसान I was टेस्ट। हाँ CLAT ही सबसे आसान। CLAT के वक्त I was never tensed हाँ on about anything। मार्क्स कम आ रहे हैं ठीक है, मार्क्स ज़्यादा आ रहे हैं बढ़िया, जो भी है। But here every day I'm tensed कि भाई ये नहीं हुआ, वो नहीं हाँ हुआ। So life here is hard, but I think in the long term and even it's very rewarding. Even कि तुमने okay, like I think last night me, Shivani and a few bunch of other friends, we were making projects till 4 a.m. in the night and also debating on something. वो बाद में तो बात करेंगे, but like we were debating, we were talking till 4 a.m. in the night. We were doing our projects. So even though it was like कि लग रहा है यार 4 बजे तक उठ के पढ़ाई कर रहे हैं, but also it वो was अलग fun बात है, because हमने we were doing प्रोजेक्ट a नहीं good करा, project. बट कंटिन्यू। बट वही आई थिंक मतलब वही कि लाइक लिविंग विद द, जैसे फॉर अस एज वेल, लाइक वी लाइक अ लॉट ऑफ पीपल हु वी न्यू लाइक इन सुपर 30 एंड ऑल, दे डिड यू नो मेक इट टू एनलेस, एंड उसके बाद अब वही लाइक यू नो देम, एंड उसके बाद हो रहा है कि हाँ भाई हम बात कर रहे हैं ऑल रात तक, कुछ भी रैंडम चीजें कर रहे हैं, कुछ बात कर रहे हैं किसी से, राइट। वैसे भी और लोग भी हैं जिनसे मिले हैं, राइट। सो वैसे बहुत जाता है कि there are a lot of there are people you can talk to as well, it's not, but obviously बहुत हेक्टिक हो जाता है, बट ठीक है। और वैसे भी I think हेक्टिक like होता है, yeah. but also point is यहाँ पे भी वही जाता है, लाइक देयर इज आई थिंक वन सिमिलैरिटी, जैसे कि क्लैट में भी यही बोलते थे हम कि भाई अगर हमसे नहीं हो रहा तो किससे नहीं हो रहा। आई थिंक यहाँ पर भी बहुत ही कम स्पेसिफिक सेट ऑफ पीपल है जो एवरीडे हर क्लास का रीडिंग करते हैं, मतलब बहुत ही ज्यादा ही कम ही लोग हैं जो रीड फॉर एवरी क्लास, राइट। Hmm. तो 180 में से It's कितने like yeah.
हाँ, मतलब जो exactly. So एक्चुअली the point रीड is, कर रहे हैं एक्चुअली कंट्रीब्यूट करें, कुछ ऐसा नहीं बस पढ़ लिया एंड बस हो गया, मतलब वो एक्चुअली डूइंग समथिंग, बिकॉज तो वो चीज है कि उतना ज्यादा वो नहीं, जैसे कि इको का टेस्ट की बात है, सो फॉर इको का टेस्ट किसी को कुछ नहीं आता था, राइट, सबका ही वो हो गया था, तो सो वो है, बट हाँ मतलब ठीक है, basically life here is more लाइफ इज difficult than हेक्टिक CLAT. बट फन, Just बस be बस yeah. But it's लॉन्ग also टर्म more में fun than CLAT. फायदा है. It's more fun than CLAT and it's more difficult than CLAT. That's I think the note we want. या Right. Okay, guys. Tell me last question, Pakka. One thing that you regret doing as a study buddy group. One mistake that you committed, but you would not want our mentees to commit as a study एंटरिंग इन buddy द group. Meeting Pranshu Gupta. Okay, so mistake. Okay, I'll tell you. So for, मिस्टेक, आई I थिंक वही think one रिवीजन वाला वुड बी अ मिस्टेक, that प्लस ये कि revision हम लोग and थोड़ा ज्यादा ही टाइम वेस्ट करते थे, थोड़ा ज्यादा ही टाइम वेस्ट हाँ, चिल like करो we पर would इतना come भी up. चिल मत करना एंड रिवाइज करना टाइम पर. तू तो मत ही बोल Yeah, कॉल पे भी नहीं आते थे, बस yeah. कसम। So so I think the mistake is like, I think we were slightly less organized than we could have been. And also like the revision, maybe some things for maths, some a few things like not very in general. अगर अब नहीं होता एनालिस्ट तब शायद लगता कि यार बहुत चीजें गलत कर दी, but not a lot to complain currently. Right. Thank you guys for this amazing session and taking your time out of the hectic NLS schedule. It was a pleasure having you here and interacting with you. Yeah, it was really fun. I hope our participants also enjoyed a lot. Yeah. Thank you guys. Do you have anything to say or else cut? Bye bye. Okay. बाय बाय बाय। Okay. Bye bye, बाय. guys. Thank you. Thank you guys for listening to our toppers so patiently and being there with us throughout the session. If you have any doubts regarding our program, please drop them in the chat section and I'll be happy to help. Uh, Nirvana Place. I don't know your near name, but real name, but what whoever you are, if you are not able to find a study buddy, please contact us, the National Law Training Institute. We'll enroll you in our program and then provide you with study buddies. And secondly, we are starting this very recent service launched last night only, that we are sharing these topper notes made collectively by Kanishk, Pranshu, and Rishabh. These run over 550 pages and cover almost every topic that you need to go through to cover your GK backlog from January to June. So if you are willing to access these notes, please drop a message on a Telegram channel. The link is in the description box. Also, you can, yeah, even I am from NLU, Bangalore, Nirvana. I got a rank of 17 in CLAT 2021. Yeah, I'm their senior. Stop laughing, Paris. So yeah, if you are willing to access the our services, please drop a text on the Telegram channel. The link is in the description box. I hope you like our initiative and also support us in the long run. Any doubts? Uh, no, Mathli. Unfortunately, this program is not free, but it's very economical and it's very affordable for everyone. It's just the program piece is just 2400 per 2400 for 4 months till CLAT, so it effectively boils down to only 600 per month. And we are giving you a host of services like GK weekly mocks, GK weekly MIT, and personalized mentorship, and also a lot of study buddies. Yeah. Any other doubt? Okay, guys. Yeah, you can message me, or if you're not able to access our Telegram channel, the National Law Training Institute, you can drop me a personal text on Telegram. We'll be happy to help. Guys, any more doubts? I'm here for last 1 minute. Cool. Okay, guys, thank you. Thank my doubt. I'm not able to get your doubt, Mohit. What if anyone attached a cheated mock test score, as in same some coaching answer key is provided the same day? Mohit, it doesn't make sense if you are scoring 120 in the cheated mock test, but you are in actual scoring like 60. It doesn't make sense if you are allotted a group that is also scoring 120. Neither they'll be able to help you, and neither you'll be able to help them. And whenever you guys decide to give a mock together, we'll know that you are scoring 60, but you attached a fake answer key. So we'll get to know, and you'll obviously be expelled from the group. So no one can like cheat us. Obviously, we are in NLS and we know how you guys play out.
Swapnil is asking, how can I pay for the 4-month program? Swapnil, the link is in the description box. Please look at our Telegram channel, and there you can find all the details. You are doing self-study, good mock tests. Good mock tests are obviously Legal Edge and Career Launcher, but they are also freely available on Telegram. Yeah, so you can access there also. Okay. Okay, guys. So see you. Thank you for listening to me patiently and being there with us throughout the session. Bye bye. And do enroll in our program. It's more economical than all other programs running on various websites and Telegram, providing similar services. Okay, guys. Bye bye.